let me ask you one honest question. What if I tell you your GST return is filed correctly, but your tax is paid on time, but still your business can receive a GST audit objection, right? So today I welcome you on the day 20 annual GST cleanup, जिसपे हम बात करने वाले हैं रॉन्ग HSN कोड के एंड रॉन्ग GST रेट की. सो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने बताया कि आपने टैक्स बिल सब टाइम से पे कर दिया, रिटर्न GST रिटर्न भी आपने सही फाइल कर दी, जब भी beside of that you can receive a GST audit objection, right? So friends, ऐसा क्यों होता है कि because of one smaller mistake, that is a wrong HSN or wrong GST rate, and trust me, this mistake is extremely common in the March closing we find normally in many companies. Now what happens, प्रोडक्ट मास्टर 1 सेट हो गया, राइट, HSN कोड भी एंटर हो गया है, और फिर साल भर वही चलता रहता है ना. नो वन रिव्यूज इट अगेन, बट ड्यूरिंग द GST ऑडिट और डिपार्टमेंटल स्क्रूटनी ऑफिसर्स चेक ना कि वेदर GST वेदर द करेक्ट HSN क्लासिफिकेशन वाज यूज्ड, वेदर करेक्ट GST रेट वाज अप्लाइड, एंड इफ क्लासिफिकेशन इज रॉन्ग ना, इवन इफ टैक्स इज पेड, इट कैन स्टिल बिकम अ टैक्स शॉर्ट पेमेंट और एक्सेस पेमेंट इशू, राइट. सो हम बात करते हैं अबाउट द कोर इंडस्ट्री इनसाइट्स की. लेट मी शेयर यू with 3 practical areas where businesses can go wrong. पहला है similar products, मतलब कि different HSN. Example की 2 products है, look almost similar, but their HSN classification ना is different. One attracts other GST rate and another attracts another GST rate. And if you apply the wrong classification ना, it becomes a short tax payment and department can demand you tax, interest and penalty. Second case आता है old GST rate use. Sometimes GST rates change through notification, right? But companies continue using old rates in the ERP system that is already installed. For example, if rate is revised from 12% to 18%, 5 to 18, but billing still happens at the same earlier old rate, this will be a serious audit observation. And yes, third point is the vendor HSN versus your HSN mismatch. Your purchase invoice shows one HSN, but your sales invoice shows another HSN. During the data analytics now, the department detects this immediately, and that's when notices start coming. So friends, at the March closing, what should the businesses do before March closing? पहला स्टेप है रिव्यू टॉप 50 प्रोडक्ट HSN कोड्स, वेरीफाई लेटेस्ट GST रेट्स, check ERP product correct classification before year end, and this simple exercise can save lakhs in tax disputes. So friends, मिलते हैं next video में. Thank you so much.